Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Today we'll take Rawls theorem or Rawls lemma. Any question? Okay, which solved example? Page number 70, example number 4. Okay, this is about rate. Right, derivative as a rate measure. Uska example number 4. Okay, let's see example number 4 then first. Page number 70, right? Okay, a man of a height 180 centimeter. Man's height is 180 centimeter, is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. The velocity is 1.2 meter per second. If the height of the lamp post is 4.5 meters, height of the lamp post is 4.5 meters, find the rate at which his shadow is lengthening. Rate of shadow we have to find, and the rate at which the shadow is lengthening, that means the length of the shadow is increasing at what rate, and the tip of the shadow is moving at what rate. Shadow tip rate. Okay, that means if this is the shadow, how fast it is becoming bigger, right? Second, the tip of the shadow, how fast it is moving away. Okay, so let's draw the lamp post. Now considering lamp post is 4.5 meter, okay, and so the man is near the lamp post, and the height of the man is 180 centimeter, which is 1.8 meters, right? So somewhere here, okay, this is man, this is 1.8 meter. Okay, now the distance between these two, let's say, is something, and now the lamp is illuminated and it will shine light on a man like this, and then this light just above the man will hit the ground, and anything below this light will not hit the ground. So all this region will be shadow region. So this is the shadow. Okay, so as per textbook, let's do this. This is point A, this is point B, okay, this is man point, lower point M, and the top point N, and this is point O, this one, center. Okay, and this distance between the lamp and a man is Y, and the length of the shadow is X, or the distance between the man and the point at which the end point of the shadow. Okay, now we want two things:
at what rate the x is increasing, which is what? Dx by dt. We want this. Initial x, final x. Right? Now, after that, what we want? At what rate this point B is moving away? Because what is happening is, the man is also moving 1.2 meters per second, right? So this man is also moving. So therefore, now assume, take this. You have to imagine this question, right? This is the lamp post. This is the man. Okay. Now this is the shadow. Now the lamp post is at the same location. The man has moved. Okay. Now the shadow also has moved. Right? Earlier, this was the length of the shadow. Now, this is the length of the shadow. Right? So this is x1, this is x2. So we can easily find dx by dt, right? If we know what was the initial x and final x, or we based on the data we have, if we directly find dx by dt, we know. But let's say this is point B. This is B dash B double dash. Okay. Now what is happening is, earlier from the lamp post, point B was this much. Okay. Which is, let's say this was y1 and x1. So this is x1 plus y1. Now this y1 has changed to y2. Now the point B is x2 plus y2. So your delta x plus y upon delta t will be your rate of change of the position of the B. Like at what rate is B moving? Right? At what rate this shadow is lengthening is only dependent on भैया वो x कितना बड़ा हो रहा है, x1 से x2 कितना बड़ा हो रहा है. लेकिन पॉइंट B विच इज द टिप ऑफ द शैडो, वो कितना फास्ट आगे मूव हो रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन आपका x और y दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं. यस यस और नो? ओके, इतना समझ गया? ओके, ये प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट है. अब ये प्रॉब्लम समझ के अभी हमें पता है कि निकालना क्या है. राइट? सो हमें dx बाई dt निकालना है और हमें dx प्लस वाई बाय dt भी निकालना है. दिस इज द शैडो लेंथ, दिस इज द शैडो टिप. समझ रहे हो? ओके ओके ओके, लेट्स सी हाउ दे हैव सॉल्व्ड. Let OA be the lamp post, MN be the man. Okay, OA be the lamp post, MN be the man, and MB, which is the length of the shadow. So आपका initial length of the shadow, which is MB, is equal to x meters. Okay. And OM be the distance of the man from the lamppost. Now OM, distance of the man from lamppost is OM is y meters. Right? Now that is at a particular time t. We don't know, 0 time, but when we started looking, it was at time t. Now
when we started looking from that time until the future time, we have to see what is the rate of increase of the length of the shadow and rate of movement of the shadow tip. This is what we have to calculate. Okay. Now the man is moving away from the lamp post. The man is moving away from the lamp post. See, in our example, it was moving in this way, away from the lamp post at 1.2 meters per second. Right? So that means what we have. Somebody said the correct answer. What do we have? Exactly. So what we have is initially man was at y distance. Now the man is continuously increasing at 1.2 meter per second, the distance y. So we have dy by dt. We have dy by dt is equal to 1.2 meters per second. Yes? Okay. Now, so the rate at which man was moving, this is rate at which man was moving away. Okay, just a second. And the rate at which the shadow is lengthening is dx by dt, which we don't know. Rate at which the shadow is lengthening. Okay. So based on the data we have, it's kind of a triangle, but it's a special triangle. So we have this kind of triangle. Okay. And we know this is 4.5, this is 1.8, this is y, this is x. So in this triangle, can I write this equation? X divided by the base of the first triangle, 1.8, is equal to x plus y divided by the base of the bigger triangle, which is 4.5. Do you guys remember this equation? Okay. Right. So now the equation we get is, if we simplify this, if we multiply it by 10, so 10x upon 18 is equal to 10x plus 10y upon 45. Actually, we don't have to multiply by 10, right? So if we take, we can just directly write x upon 18 is equal to x plus y upon 45. Right, because even if we multiply by 10, let's take 10 common. Here we have 10, that both the 10 will cancel out. Okay, so this is the basic equation we have. Finally, if we simplify, we will get x is equal to 2y by 3. Can you quickly do that? Okay, so x equal to 2y by 3. Now we have relation between x and y, right? When we have dy by dt. So if we differentiate x with respect to t, this equation with respect to what do we get? Differentiate
the equation number 1 with respect to time t. We will get dx by dt is equal to 2 by 3 dy by dt. Now what is dy by dt? We already know the rate at which the man is moving. So 2 by 3 into 1.2 is 2.4 by 3 is 0.8 meter per second. So the rate at which the shadow is moving, we already know, is 0.8 meter per second. Okay. Now, is this part clear? Okay. Second part, we will use a property of differentiation, which is what? Now we want rate of x plus y upon dt. We want a rate of change of y and x both. When y and x both are changing, we will know at what speed is b moving away, right? क्योंकि ये जो पॉइंट B है, इसको मूव कौन कर रहा है? इसको ये सेगमेंट मूव कर रहा है और ये सेगमेंट मूव कर रहा है, राइट? सो दोनों का स्पीड मिला के B का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, ये भी खुद से आगे मूव कर रहा है, तो दोनों बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो दोनों यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? सो B का स्पीड क्या हो गया? Y का इंक्रीज और X का इंक्रीज, उसको ऐड करना है. और डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हैं? dt ऑफ x प्लस वाई हमें करना है, तो वी विल यूज द सेम सिंपल प्रॉपर्टी dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी. ये दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया. What do we have? dx by dt 0.8 and dy by dt is 1.2, which is 2 meter per second. So your rate of increase of the length of the shadow is 0.8 meter per second, and rate of movement of the tip of the shadow is 2 meter per second. Okay, is that clear? Okay, any question, any other question? Page number? Sorry, say that again slowly, say that again. Example number 6. Which step? Can you read the step? Which form? Okay. So example 6 में page number 75, your question is कि हमें f of x equal to
log of x बेस 10 है, राइट? सो मैं इसको log of x बेस e अपॉन log of 10 बेस e ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? क्या मैं इसको log e बेस e log e बेस e ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, no? The one who had question, is that clear? इसको मैं 1 by 1 से मल्टीप्लाई करूँ चलेगा? तो मैं इसको log e बेस e अपॉन log e बेस e करूँगा तो चलेगा, है ना? सिंपल है. ओके. समटाइम्स वी थिंक टू मच, दैट्स वाई समझ में नहीं आता हमें. No, multiplication. Okay, so log x base e. Now log e base e, what is the value of log e base e? 1. सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे log e बेस e ऊपर का रहने दूंगा, नीचे log 10 बेस e लिख दूंगा, एंड दिस इज ऑलरेडी 1 is equal to, this will be what? This will be log e base 10 log x base e. सो आपका f of x क्या हो गया? log e base 10 log x, and this is constant. Yes? Okay. Any other question? Okay. Okay, now let's go to next section, 2.3.1. Rawls theorem. सो रॉल्स थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट है कि इफ देर इज अ फंक्शन लाइक दिस, एनी फंक्शन f which is continuous in the domain ab and differentiable, a से b तक differentiable है, open interval differentiable, we'll find a से b तक differentiable है, और f of a is also equal to f of b, राइट? मतलब ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है. सो क्या हो जाएगा? ये अगर f of a इक्वल टू f of b की वैल्यू है, राइट? मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, दोनों सेम है फंक्शन पे. सो मतलब फंक्शन ऐसा होना चाहिए, यस और नो? या फिर फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ओके? राइट? नाउ what they are saying is कि if this is true, if this is the condition कि ये फंक्शन ऐसा है जिसका f of a और f of b इक्वल है, और वो फंक्शन that function is continuous, that function is differentiable at both point a and b, then there exists a point c such that f dash c is 0. एक पॉइंट a और b के बीच में एग्जिस्ट करता है जहां पे ये देखो और ये देखो, यहां पे अगर मैं स्लोप निकालता हूं फंक्शन का तो ये हो गया f डैश c. ये स्लोप क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस. क्या होगा इसका स्लोप?
0। अब ये दूसरा लेता हूं मैं, ये वाला, ये पॉइंट पे, यहाँ पे एफ डैश सी। अब ये दूसरा सी है, ये दूसरा सी है, मैं दो कर्व के लिए अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू 0। सो मतलब आपने देखा एक फंक्शन कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, it is differentiable at a and b and also in between a and b। वो फंक्शन f of a is equal to f of b, then there exists a point in the function between a and b such that कोई एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएशन जो उसका है वो जीरो होगा। दैट मीन्स tangent to the function, tangent to the curve will be parallel to the x axis। एक ऐसी लाइन होगी। इसका सिंपल मतलब क्या है बताओ। ये कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो या तो एक फंक्शन ऐसा होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो वो यू शेप का होगा ना कर्व, राइट। वो कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है, वो इक्वल भी है दो पॉइंट्स पे, तो यू शेप का ही होगा। तो अगर यू शेप का है तो उसका एक लोवेस्ट पॉइंट होगा जिस पे अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा तो टेंजेंट ऐसी आ जाएगी, राइट, सिंपल। सो उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे क्या है, 0, राइट। दूसरी केस एन शेप का होगा, उसका भी एक हाईएस्ट पॉइंट होगा कोई, क्योंकि उसको वापस वहीं आना है, एक तो नीचे से आए या ऊपर से आए, है ना। सो ये भी अगर स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे तो ये भी 0 आएगा। दैट इज रॉल्स थ्योरम, ओके। So tangent to the curve at some point between A and B, ये point C, tangent at that point is 0. There exists a point. Okay. Now, any question about this? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रोल्स थ्योरम का कि क्या दो, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी एक लिमिट दी है हमें ए से बी तक, वो डिफरेंशिएबल है, ए और बी पे भी डिफरेंशिएबल है और उन दोनों के बीच में भी डिफरेंशिएबल है। दोनों के एंड पॉइंट सेम है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है, तो गारंटी से अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे स्लोप 0 है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि फंक्शन एक तो नीचे से ऊपर आएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा, दोनों में से एक होगा, राइट। इतनी सारी जब कंडीशन दे दी है तो एक तो फंक्शन ऐसा है या फिर ऐसा है, तो अगर दोनों में से एक है या दोनों में से एक है तो एक लो पॉइंट या फिर हाई पॉइंट आएगा, और लो पॉइंट और हाई पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इतना समझना है, क्लियर है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन एग्जांपल। वी हैव टू वेरीफाई whether this function follows the theorem or not. Function is 2x cube minus 5x square plus 3x plus 2, where x belongs to 0, 3/2. So that means ये जो डोमेन दिया है हमें, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ डिफरेंशिएबल है, राइट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ओके। हाँ, सो मतलब ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, राइट। सो ए इज 0 एंड बी इज 3/2, ओके। सो लेट्स सी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है। लेट्स एफ ऑफ ए इज, सारे x 0 हो जाएंगे, बचा 2। एफ ऑफ बी इज
2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस 2. Let's see what comes out. ये हो जाएगा 3 क्यूब 27 इंटू 2 54 2 का क्यूब 8 माइनस 9 45 4 9/2 प्लस 2. ओके, सो ये 54 अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करता हूँ 54 माइनस इसको डबल कर दिया 90, इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया 36. ओके, डिवाइड बाय 8 प्लस 2. सो 54 प्लस 36 कितना होगा? ओके, सो दिस इज 0 प्लस 2 is equal to 2 finally. Okay, are you guys able to see the screen? Okay, so for this f of b and f of a दोनों equal है, right? and ये continuous function भी है, ये differentiable function भी है between 0 to 3.2. सो दैट मीन्स इसके रोल्स थ्योरम के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो सारे मेट होते हैं. ओके, नाउ वी विल चेक कि रोल्स थ्योरम किसी फंक्शन के लिए वैलिड है या नहीं पूरा, नॉट जस्ट द कंडीशंस. लेट्स टेक वन एग्जांपल. f of x equal to x square minus 4x plus 10, डोमेन है 0 to 4, राइट. सो ये तो पॉलिनोमियल है, उसकी वजह से कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट. चलो पहले f of a निकाल लेते हैं. f of a इज f of 0 is 10, f of b is f of 4 is 16 minus 16 plus 10 is again 10. So आपका f of a is f of b and the function is continuous and differentiable. Now we know that all the conditions are satisfied, so we need to figure out what is that point c where f dash c is 0. We have to find that point c. So what do? We know कि एक ऐसा पॉइंट है जहां डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए. सो क्या करना है? So we will differentiate this function, right? So मुझे f dash x will be 2x minus 4, right? और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा. So I will equate this differentiation to 0, right? So that means f dash c is 2c minus 4 equal to 0, 2c minus 4 equal to 0, c is 4/2 is 2. That is the point. So आपका जो डोमेन है 0 से 4, इसके बीच में पॉइंट 2 पे f dash c is 0. Therefore हमारा क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूस 0 to 4. फंक्शन इज कंटिन्यूस. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 0 to 4. f of a is equal to f of b.
नाउ ये इनिशियल कंडीशन ये तो वेरीफाई हमने कर ही ली थी. फाइनली एफ डैश सी इज एफ डैश टू इज 0. सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. दैट मीन्स दो पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है. ओके समझ गया. Okay. Do you guys want to do one more numerical or should we move ahead? Because this is almost verifying the condition and then finding a derivative, equating that derivative to 0 and then finding the value of x. Right? Yeah. राइट. सो 3 एग्जाम्पल है, 3 से 4 एग्जाम्पल है शायद. सो यू गाइस ओवरऑल, हाँ ओवरऑल 4 एग्जाम्पल है. बट एनीवेज, सो वी कैन कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. So इसका बेसिक डेफिनेशन क्या? इट सेज, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ. अगेन रोल्स थ्योरम क्या था कि कोई तो ऐसा फंक्शन है जिसका एक पॉइंट 0 रहेगा या फिर ऐसा फंक्शन रहेगा जिसका एक पॉइंट ऐसा रहेगा. राइट? सिंपल रोल्स थ्योरम. ओके. अभी लैग्रेंजेस थ्योरम में कोई तो फंक्शन है ऐसा, ठीक है, जहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है. अब पॉइंट ए पे वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है? ए एफ ऑफ ए. यहाँ पे वैल्यू है बी एफ ऑफ बी. Okay, right? So point A, point B, if I join this line, तो इस लाइन का मुझे स्लोप मिलेगा. इस लाइन का स्लोप मैं कैसे निकाल पाऊंगा? कोई बताएगा मुझे? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. एग्जैक्टली, वेरी गुड. लेकिन क्या आपको इससे दिख रहा है कि हमने ऐसा ही कुछ किया था डिफरेंशिएशन में, वेर हमने बस क्या ऐड कर दिया था? लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा. राइट? तो हम a और b के डिफरेंस का इतना कम कर देंगे कि वो एक ही पॉइंट हो जाएगा. तो इन a और b के बीच में हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसका स्लोप भी वैसा हो, पॉइंट सी. सो ये जो स्लोप m है और ये क्या मिला मुझे पॉइंट सी पे? एफ डैश सी. सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलता है कि आपका एफ डैश सी, ए और बी के पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी है, उस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे, that slope will be equal to m, which is eventually equal to f of b minus f of a upon b minus a. डिफरेंशिएशन के इक्वेशन से कंफ्यूज मत करना. ये पॉइंट c है जो a और b के बीच में है, ये b का है, ये a का है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है. वो काफ़ी दूर दूर है. इट लुक्स लाइक इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बट ऑल इट इज सेइंग इज दिस इज स्लोप ऑफ अ सेगमेंट joining point A and B. This is slope of at a point
ऑफ अ कर्व बिटवीन ए एंड बी। तो ये बोलना है कि ऐसा अगर कोई कर्व है, अभी लेट्स सी व्हाट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, ये एफ है, दिस एफ इज कंटिन्यूअस on a closed interval AB and it is differentiable at an open interval AB, there exists at least one point C in an open interval AB such that f dash C slope at that point, differentiation at that point or slope is equal to f of b minus f of a upon b minus a, which is slope of a segment. ज्योमेट्रिकली आपको समझ गया क्या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? मैथमेटिकली छोड़ो, वो तो बाद में आएगा। ज्योमेट्रिकली समझ गया, एक फंक्शन है कंटिन्यूस, पॉइंट ए से बी तक, डिफरेंशिएबल है, हाँ है, स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है, तो डिफरेंशिएबल है, राइट? वो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने और हमने बोला, उन्होंने whoever studied it, what they wanted to find is कि इसी स्लोप का मुझे कोई पॉइंट मिल जाएगा क्या? तो हाँ मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट विच इज लाइक दिस इफ इट फॉलोज द कंडीशन, ओके, राइट? सो विच मीन्स व्हाट? Slope at point C, differentiation at point C is equal to slope of the chord AB. That's it. Okay. Okay. Let's solve one numerical. By the way, any question? Example 1, verify Lagrange's mean value theorem for a function f of x equal to root x plus 4 on the interval 0 to 5. Right? So, अगर आप 0 से 5 के बीच में हर एक वैल्यू डालोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और वो फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके? सिंपल फंक्शन है ये, ओके। सो पहले आपको मिलेगा, अगर 0 डालोगे तो रूट 4 मिलेगा, फिर रूट 5 मिलेगा, रूट 6 सो ऑन अप टू रूट 9, 0 to 5 के बीच में, राइट? कंटिन्यू है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, we can differentiate at every point and put the value, okay? 1 upon 2 root x, 1 upon 2 root x plus 4, उसमें x की वैल्यू डालो, डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट और डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी मिल गई। सो इसका f डैश x इज 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 4। लेट्स सी f ऑफ a और f ऑफ b सेम है या नहीं। f ऑफ a इज f ऑफ 0 is equal to root 4 equal to 2. F of b will be f of 5 will be 5 plus 4 equal to 9, root 9 equal to 3. F of a is not equal to f of b. But Lagrange's mean value theorem में इसकी requirement है क्या f of a should be equal to f of b? No, वो requirement ही नहीं है, right? But हमें f of a की वैल्यू पता चल गई, f of b की वैल्यू पता चल गई। Yes? Okay. Now, as per Lagrange's mean value theorem, अगर इस फंक्शन के लिए वो वैलिड है, that means there exists a point C, f dash C, which should be equal to f of b minus f of a upon b minus a, right? और मुझे f dash x पता है, तो मैं इसको f dash c कैसे लिख सकता हूँ? 1 upon 2 root c plus 4. I can write this. Okay. So मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, which is 1 upon
2√c+4 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है 3, एफ ऑफ ए क्या है 2, बी क्या है 5, ए क्या है 0। सो क्या आ गया आपका 1/2√c+4 इज 1/5। लेट्स सिंप्लीफाई। 5/2 is √c+4. Squaring both sides, 25/4 is c+4. Your c is 25/4 minus 4. C is 21/4. Is it? No. 16 minus 5, this is not 21. 16, 9/4. Okay. Right? Is 9/4 between 0 and 5? Nine by 4 is 2 point something, which is between 0 and 5. Therefore, Lagrange's mean value theorem here is verified. How? Because slope of the chord is equal to slope of the curve at a point, and that point has to be between A and B. So वो हमने जैसे इक्वल किया, हमने पॉइंट सी निकाला और पॉइंट सी दोनों के बीच में सही में आ गया। अगर पॉइंट सी दोनों के बीच में नहीं आता, that means there does not exist any point in between A and B जहां पे वो स्लोप इक्वल हो। समझ गया आपने कैसे वेरीफाई किया हमने? ओके। Now let's move on to another section, increasing and decreasing functions. 2.4.1 increasing and decreasing functions. So increasing and decreasing function, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक तरीके से समझा जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये x है, ये y है या फिर f ऑफ x है, ठीक है। सो जब x छोटा है और बढ़ते जा रहा है x, राइट, x1 x2 सो ऑन, x इज इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग x के साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो इसको सीधा सीधा मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा, राइट। नाउ अगर सिमिलरली with increasing x, x1 x2 so on, my function's value is decreasing, तो मैं क्या बोलूंगा इसे? Exactly decreasing function, right? No big rocket science. अभी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? कोई भी अगर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये वैल्यू समझो कोई x डैश है, इससे थोड़ा इधर मतलब, या फिर a ले लेता हूं मैं, just a. So a minus h is a small thing, small unit, a से पहले, a minus h, a और a plus h. So a minus h is less than a and a is less than a plus h. So f of a minus h is also less than f of a less than f of a plus h. मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये है f of a minus h, ये है f of a, ये है f of a plus h, मतलब बढ़ते जा रहा है।
और दूसरी बात, अगर मैं यहां स्लोप निकालता हूं तो इज माई स्लोप पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? ओके, सो ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई कि मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है एफ ऑफ ए, उससे बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट? और वहां पे अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो मुझे स्लोप 0 से बड़ा ही मिलेगा, 0 या 0 से बड़ा। ओके, अगर मेरा फंक्शन ऐसा स्टार्ट होता है, सो इस पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट है वो 0 है, इस पॉइंट पे, राइट? इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट क्या है? ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? ओके, नाउ वी गो बैक टू अनदर सेक्शन। अभी यहां पे कोई ले लेते हैं पॉइंट ए, इधर है ए माइनस एच, इधर है ए प्लस एच। अभी फंक्शन ए माइनस एच, बाय द वे ए माइनस एच इज लेस देन ए इज लेस देन ए प्लस एच। ये जो x की वैल्यू है ना, ये x है ना, a प्लस एच क्या है? ये a माइनस एच, a प्लस एच ये कहीं तो। सो योर a माइनस एच इज स्मॉलर देन a and a is smaller than a plus h. Same is here, a minus h smaller than a is smaller than a plus h, right? अभी f of a minus h is actually greater than f of a. f of a is greater than f of a plus h. That means पुरानी वैल्यू नए वैल्यू से बड़ी है, तो वो दैट मीन्स वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। Another thing, if you take a slope somewhere there, your slope is negative, f dash a is less than or equal to 0. Yes? Okay. Now let's quickly, whatever we discuss, let's quickly go through this mathematically. Okay? Increasing function. Simple diagram, x, y, and it is increasing, right? F of x1, f of x2. This is x1 and x2. x1, x2. This is somewhere point A, somewhere point B. Right? Now, अगर मैं कोई भी अगर इसमें x ले लेता हूं कहीं पे भी, ये जैसे x1 को अगर मैं x मानूं तो x2 को x प्लस h बोल सकता हूं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम विल बी h. x और x प्लस h हो गया. सो आई नो x इज लेस देन x प्लस h. Yes, no? Okay. Now, by looking at the function, can you say f of x is less than f of x plus h? Right? F of x is this point. F of x plus h is this point. F of x is less than f of x plus h. इसको अगर मैं उल्टा लिखूं, f of x plus h is greater than f of x. Now I subtract f of x from both sides. F of x plus h minus f of x greater than f of x minus f of x 0. Now I divide h both side. F of x plus h minus f of x divided by h is greater than 0. अब मैं बोलूं कि h इतना छोटा कर देते हैं, मतलब it will be closer to a point.
x and x plus h will be adjacent points. Yes, it tends to 0, should be at considering it's 1 point. ओके, सो मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus f of x upon h is greater than 0. Right? Now, because we are taking limits, f of x minus f of x plus h minus f of x दोनों सेम भी तो हो सकते हैं उसी पॉइंट पे, एकदम अगल बगल में. जैसे हमने यहां देखा, यहां ऑलमोस्ट एक दो पॉइंट शुरुआत के सेम ही थे. राइट, सो f of x plus h minus f of x upon h when limit h tends to 0 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन कभी कभी इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं. जब हमारी h की लिमिट कम नहीं थी, 0 के पास नहीं थी, h बड़ा हो सकता था, तब हमें ऑलरेडी पता था कि ग्रेटर देन 0 है. लेकिन जब h को छोटा कर दिया, तब हमें पता है ग्रेटर देन 0 है, बट इक्वल टू 0 भी हो सकता है. यस, ओके. नाउ व्हाट इज दिस? f dash x greater than or equal to 0. सो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का. यस, इज दैट क्लियर? इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्लोप एक तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा. ओके, एंड वी ऑलरेडी सॉ, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये थोड़ा सा h इधर, तो ये पॉइंट हो गया a माइनस एच, ये पॉइंट हो गया a प्लस एच. राइट, नाउ a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, and your function a minus h is also less than f of a less than f of a plus h. right, that means वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है. जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एंड आपका डिफरेंशिएशन हैज टू बी पॉजिटिव. ओके, नाउ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम एनालिसिस, डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये दो पॉइंट है समझो, x1 एंड x2, लेकिन आप, मैं इसको x बोलूंगा, इसको x प्लस एच बोलूंगा. अगेन दिस इज द डिफरेंस. राइट, यहां पे x इज ग्रेटर देन x प्लस एच. राइट, देखो ये x का पॉइंट, ये x plus h, but f of x is also greater than f of x plus h. No, wait, x is less than x plus h. देखो x on x axis, x is smaller, x plus h is bigger. Right, we are going this way, but your function f of x is greater than x plus h because your function is going down. यहां से भैया नीचे चले गए, ये f of x है, ये f of x plus h है. राइट, बट योर फंक्शन वेंट डाउन. इसको अगर मैं उल्टा लिखूं, f of x plus h is less than f of x. Now doing the same analysis, f of x plus h minus f of x less than 0, subtracting f of x from both sides. Now I divide by h on both sides. f of x plus h minus f of x less than h is less than 0. ये less than 0 पे ध्यान रखना है. I apply limit, h को मैं बहुत छोटा कर दूँ क्योंकि मुझे देखना है at a point स्लोप क्या कर सकता है. लिमिट h टेंड्स टू 0,
f of x plus h minus f of x upon h is what? इक्वल क्या साइन होगा? लेस देन और इक्वल टू जीरो. एग्जैक्टली, बिकॉज h इतना स्मॉल है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी भी है, राइट? सो लेस देन और इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स योर f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. सो देखो यहाँ, अगर मैं स्लोप निकालता हूं, निगेटिव है m की वैल्यू. देखो मैं आपको बताता हूं, x इसका स्लोप क्या है? 0. y इक्वल टू x इसका स्लोप है 1, राइट? ये स्लोप है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी. सो मतलब 0 से लेके इधर तक ऑल पॉजिटिव. ये है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये है y इक्वल टू प्लस एक्स, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स. यहाँ स्लोप है -1, इधर अगेन नॉट डिफाइंड बट माइनस इन्फिनिटी. सो योर निगेटिव स्लोप है इधर सारा, राइट? सो ये स्लोप क्या हो गया? निगेटिव, राइट? एक्स एक्सिस के अगर नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो नेगेटिव है. एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक एक्स एक्सिस है, लाइन ऐसी है तो पॉजिटिव स्लोप है, ऐसी है तो नेगेटिव है. सिंपल, राइट? सो डिक्रीजिंग फंक्शन में नेगेटिव स्लोप दिख रहा है हमें, राइट? अगेन a माइनस एच इज लेस देन a प्लस एच, बट f of a minus h is greater than f of a plus h. ये समझ गया? कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये a है, ये a माइनस एच, a प्लस एच, ये f ऑफ a माइनस एच, ये वाला f ऑफ a, ये f ऑफ a प्लस एच. सी, f of a minus h is greater than f of a plus h. But increasing function में a minus h, a plus h, f of a minus h, f of a plus h. See, increasing, decreasing. This is f of a minus h is greater than f of a plus h. Here f of a minus h less than f of a plus h. Is that clear? Okay. Now we can stop here, and we'll do some. We can start tomorrow with some solved numericals, and we will complete the remaining theoretical part. Okay. I think there are two more concepts remaining: maxima, minima, and second derivative test. Okay, so let's stop here and we'll continue tomorrow. Okay, thank you. Bye bye.